बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक जावेद है और अप्लाइड फिजिक्स के इस कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस मॉड्यूल में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये मॉड्यूल वेक्टर्स की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें हम वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम वेक्टर्स में वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। फिर we will review some of the properties of vector addition। उसके बाद वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करेंगे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स की, द वेक्टर्स दैट शो द डायरेक्शन। और लास्ट में हम इस लेक्चर में इस सेशन में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन वेक्टर्स के साथ। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर्स और वेक्टर्स की बात करेंगे और उनकी एग्जांपल्स की बात करेंगे। जब हम स्केलर्स की बात करते हैं तो उसमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही होती है जिनके मैग्नीट्यूड और यूनिट्स उनकी बात हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है उसमें टेम्परेचर का जिक्र है और इसमें जो एग्जांपल दी गई है 10 डिग्री सेंटीग्रेड की एग्जांपल दी गई है। 10 जो है इस स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है और डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसका यूनिट है। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज स्केलर्स की कैटेगरी में आएंगी जिनका जो है वो नंबर होगा एक, और एक जो है वो यूनिट होगा। जैसे मैस है, हम उसको किलोग्राम में मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वांटिटी जिसकी हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और उसके साथ साथ डायरेक्शन का जिक्र होता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल दी गई है और 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इसमें नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन है, मीटर इसके यूनिट्स हैं और 5 जो है वो एक नंबर है। तो वेक्टर क्वांटिटीज की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम जो है वो एक स्केलर और साथ साथ एक यूनिट की बात करेंगे और डायरेक्शन की बात करेंगे। तो हमारे पास जो है इन एडिशन टू ए नंबर एंड ए यूनिट जो है वो एक डायरेक्शन जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ज्योमेट्रिकली, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, इसके लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे जिसमें के दो पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इसमें एक एरो की मदद से जिसका टेल जो है वो पॉइंट ए पे है और जिसका हेड जो है वो पॉइंट बी पे है। तो इस तरीके से एक डायरेक्टेड एरो जो है वो शो करती है एक वेक्टर को, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ या जो डायरेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, ये जो है वो इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। देर आर अदर वेक्टर क्वांटिटीज एज वेल जिसमें के वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर की कैटेगरी में आती है। अब हम मजीद एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज में एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है। अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखें जिसमें हमें ए से बी की तरफ जो है वो एक वेक्टर जो है वो नजर आ रहा है। अब अगर हम एक पार्टिकल जिसकी पोजीशन इनिशियली ए थी उसको हमने पोजीशन बी पे मूव किया है, इसमें हम कोई भी पाथ ले सकते हैं ए से बी तक जाने के लिए। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करेंगे जिसमें के एक नंबर, एक यूनिट और
डायरेक्शन एसोसिएटेड है, तो हम एक डायरेक्टेड एरो की बात करेंगे जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ डायरेक्टेड है। और इस केस में भी अगर आप देखें तो जो पार्टिकल है, द पार्टिकल अंडरवेंट ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द डायग्राम। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल जो कि इनिशियली हमने पॉइंट ए पे प्लेस किया हुआ है, उसकी जो पोजीशन है वो फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बाय द एक्चुअल पाथ इज represented with a curve with the red line, and similarly then from point B to point C, इसको जो है वो पोजीशन को शो किया गया है बाय द यूज ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर ए बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी, एंड सिमिलरली वेक्टर बी सी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन चेंज ऑफ पार्टिकल फ्रॉम बी टू सी। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें और नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो ये ए से सी की तरफ एक डायरेक्टेड एरो जो कि वेक्टर ए सी है, इससे रिप्रेजेंट की जा रही है। इस तरीके से कोई भी दो वेक्टर अगर हम उनको ऐड करना चाह रहे हैं, हम एक छोटी सी एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें हमारे पास जो है कोई दो गिवन वेक्टर हैं, और उन दो गिवन वेक्टर्स जो हैं उनको हम ऐड करना चाह रहे हैं। लेट्स से इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। लेट्स से एक वेक्टर जो है वो हमारे पास इस तरीके से गिवन है, दिस इज वन वेक्टर, एंड सिमिलरली देयर इज अनदर वेक्टर। लेट्स से मैं वो इस एग्जांपल की मदद से देन व्हाट वी डू, हम ये करेंगे कि एक वेक्टर जो है उसका हेड और दूसरा वेक्टर जो है उसकी टेल, वो हम आपस में मिला देंगे बाय यूजिंग द ज्योमेट्री। तो हमने इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से जो एक वेक्टर, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो हमने इन वेक्टर ए और बी को इस तरीके से प्लेस किया है कि एक वेक्टर की जो टेल है वो दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जो है वो मिल गई है। अब इसके बाद हम ए से एक ए की टेल से बी के हेड की तरफ एक जो एरो है वो ड्रा करेंगे, एक वेक्टर ड्रा करेंगे। तो ये वेक्टर जो है ये इन दोनों वेक्टर्स का सम कहलाएगा। सो एस इज इक्वल टू, और हम इसको वेक्टर की नोटेशन में इस तरीके से लिखेंगे कि एस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरीके से कोई भी गिवन वेक्टर्स जो हैं, अगर वो एक से ज्यादा दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ए बी एंड सिमिलरली ए सी वेक्टर एंड अदर वेक्टर, उनको भी हम इसी तरीके से ग्राफिकली ऐड करेंगे और उसका सम जो है वो हम लिखेंगे। यहाँ पे इस स्लाइड में इस चीज को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। जब हम दो वेक्टर्स को ऐड, ए और बी दो वेक्टर्स उनको ऐड करना चाहेंगे, तो हम उनको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि एक जो है वो हेड और टेल जो है वो उनकी कंसाइड हो जाएगी। जैसे ए वेक्टर को बी में ऐड कर रहे हैं, तो ए जो है उसकी उसका हेड और बी जो है उसकी टेल। तो इस तरीके से एक डायरेक्टेड जो है वो पाथ बन जाएगा, और इसको बाद में फिर हम
जो उसका रिजल्ट वेक्टर होगा वो टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी की तरफ होगा। सो वी टॉक अबाउट द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी। इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। द वेक्टर एस इज सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब हम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करने का जो है प्रोसेस उसको देखेंगे कि अगर हमें कोई वेक्टर बी गिवन हो, यहाँ पे एक वेक्टर बी है, अगर हमें एक वेक्टर जो है वो बी गिवन हो तो अगर हम उसका साइन चेंज कर दें तो उस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। इस बी के साथ प्लस लिखा हुआ है लेकिन आमतौर पे जो प्लस साइन है उसको शो नहीं किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम माइनस बी, अगर एक गिवन वेक्टर है और उसका हम माइनस साइन चेंज करके प्लस कर दें तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। इस तरीके से हम वेक्टर्स जो है उनकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे इस एग्जांपल में, जो कि इस कंसेप्ट में जो कि यहाँ इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है। इसमें हमारे पास दो वेक्टर हैं और हम उन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसमें जो पहला स्टेप होगा उसमें हम जो हमारे पास वेक्टर बी है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे बाय यूजिंग द माइनस साइन। और उसके बाद इन दो वेक्टर्स को जो कि ए और माइनस बी है इनको ऐड करेंगे। तो कंसेप्ट ये है कि दो वेक्टर्स को जो कि जिनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको हम वेक्टर एडिशन की मदद से जो है वो ऐड करेंगे, जिससे वो सब उनका जो नेट रिजल्ट होगा वो ए माइनस बी की सूरत में होगा। तो जब हम इस माइनस बी वेक्टर को जो है इसकी जो टेल है और जो ए का हेड है उसको कंसाइड करेंगे तो वी ड्रॉ ए वेक्टर एंड देन वी ड्रॉ द माइनस बी वेक्टर एंड देन वी टेक a sum of these two vectors। तो वो जो सम होगा वो प्राइमरीली ए माइनस बी में हमें रिजल्ट दे। इस तरीके से जो सब्ट्रैक्शन है उसको हम वेक्टर एडिशन से इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी है इसमें हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ की, जिसमें अगर हम दो क्वांटिटीज की पोजीशन अगर चेंज कर दें तो उनका रिजल्ट जो है वो सेम रहता है, दे आर स्टिल इक्वल। इसको यहाँ ग्राफिकली भी शो किया गया है। अगर हम पहली एग्जांपल की बात करें जिसमें ए प्लस बी का जिक्र हो रहा है, सो वी टेक द वेक्टर ए and similarly we take the vector b and then we add those vectors to get the a vector plus b vector। तो ये इनका जो है वो सम वेक्टर है। अब हम अगर राइट हैंड साइड लें, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो सबसे पहले हम बी वेक्टर को ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद ए वेक्टर को ड्रा करते हैं और जब इन दोनों को ऐड करते हैं वी गेट द सेम वेक्टर which is now represented with b plus a। So on the left hand side and on the right hand side both vectors are the same। So in commutative law which is written in for vector addition, जिसमें आपके जो quantities हैं वो vector quantities हैं, उनको हम जब लिखते हैं ऐड करते हैं तो दे ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको या लॉ को जिसको हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, विच सेज कि जब हम ऐड कर रहे होते हैं
तीन वेक्टर्स को, सो द ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर, कि हम क्या पहले ए और बी को ऐड करते हैं और फिर सी को ऐड करते हैं, या हम बी और सी को पहले ऐड करते हैं और उसके बाद ए को ऐड करते हैं, द रिजल्ट रिमेन्स सेम, result remains same. That means result remain A plus B plus C. तो the result remains same. चाहे हम किसी भी ऑर्डर में जो है वो वेक्टर्स को ऐड करें। सिमिलरली अगर हम इसमें कम्यूटेटिव लॉ को भी इंट्रोड्यूस करवाएं, देन द पोजीशन ऑफ द वेक्टर आल्सो डज नॉट मैटर, कि हम जो है वो अगर सी को बी को की पोजीशन चेंज कर दें, और सिमिलरली वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ए एंड बी, सो स्टिल वी गेट द सेम वेक्टर जब हम उनको ऐड करेंगे। इसी चीज को ग्राफिकली यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लें जिसमें पहले ए और बी को ऐड किया गया, तो जब हम ए को और बी को ऐड करेंगे, सो वी गेट द ए प्लस बी वेक्टर, और फिर ए प्लस बी वेक्टर में जब हम सी वेक्टर को ऐड करेंगे, सी वेक्टर इज दिस वन, सी वेक्टर को ऐड करेंगे, गेट द ए प्लस बी प्लस सी। और अगर हम जो है वो राइट साइड को ले लें, जो कि हमें, अगर हम राइट साइड को ले लें जो कि ए, जिसमें बी और सी को पहले ऐड किया गया है और ए को बाद में ऐड किया गया है, so first we take the vector b, which is this one, and then we take the vector c, which is this one, and we get the b plus c, and then we take the vector a, and then b plus c, and we will again get the same vector a plus b plus c. So this way, the associative law, which says that the addition of three vectors, the order of addition does not matter. How we add those vectors, we still get the same result. Now we talk about the vectors components. When we talk about the vector component, a component of a vector is a projection of that vector on an axis, which may be x-axis or y-axis. So first we consider the rectangular coordinate system, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास x-axis है और y-axis. So we consider the rectangular coordinate system, जिसके अंदर हमारे पास x-axis है, y-axis है और origin है. And we consider a vector A, which is making an angle theta with the horizontal. So this vector A has a projection on x-axis, which is shown here along the x-axis with vector AX. So this vector AX is a projection of this vector A, जो कि इस वेक्टर ए का साया है। अगर हम यहाँ ऊपर एक लाइट ऑन करें तो नीचे हमें इसका एक साया नजर आएगा, so that is primarily a shadow or projection of this vector A on x-axis. So this is the x component of the vector A. And similarly, if we talk about the projection of the vector on y-axis, यानी y-axis की तरफ अगर हम projection की बात करें, then this is called a vector y, which is along the direction of y-axis. तो इनफैक्ट जब हम a के कंपोनेंट की बात करेंगे, एक वेक्टर a के कंपोनेंट की बात करेंगे, so the a vector has a component, one component in the direction of x-axis and one component in the direction of y-axis.
So these are the components of vector A in the direction of x and similarly in the direction of y. We can similarly represent a vector with its component in the form of a right triangle. एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, उसको अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर मैप कर लें, so we get the x component of that vector and similarly we get the y component of that. And we can also write by using trigonometry the relation of the angle and the x and y components, जो कि हम थोड़ी देर में इसको भी इंशाल्लाह ताला देख लेंगे. तो इस सेक्शन को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. इस सेक्शन में हम x और y प्रोजेक्शन या y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं एक वेक्टर a के. So projection of a vector on x-axis is its x component and the projection of y-axis on the y-axis is the y component. So we are talking that this is the x component and this is the y component. This y component. And if we use the trigonometry, we then obtain the 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 components in terms of the vector magnitude and the angle. So the ax is a cos theta and ay is a sin theta. So this is another way to find the vectors. So ax is primarily a cos theta and ay is a sin theta. These results came from trigonometry. और जो मैग्नीट्यूड है a की, we can find the magnitude of vector a by taking square of each component and then adding the square and then taking a square root. तो जो x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है, उन उनकी जो वैल्यूज हैं या उनकी जो लेंथ है उसका स्क्वायर लेके उनको ऐड करना होगा और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है. And how we can find the angle? Angle is determined through this formula. Tan theta is equal to y component divided by the x component. So theta can be obtained from this equation as tan inverse of y component and x component. We will see in numericals. इस चीज को हम numericals में भी देखेंगे. Now we take one example, and in this example, we have a distance जो कि towards west है, 2.6 kilometers distance is shown by this vector. And similarly, a distance of 3.9 is shown by this vector. And our task is to find the actual displacement from the center or this point
to this point, and the angle. So this is our task. So by using geometry, first we redraw redraw this diagram in the form of a right angle triangle, जिसके अंदर जो है वो हम एक साइड जो है वो हमने 2.6 किलोमीटर से शो की है, और एक साइड जो है वो हमने 3.9 किलोमीटर जो है उससे शो की. So by transforming the given diagram to another diagram जो कि right angle triangle है, now our task is to find the distance of this vector जो कि इनका resultant vector है, and the angle. So by using the formulas जो कि हमने इससे पहले स्लाइड में देखे थे, we take the square of the x component. Let's say this is the x component, and then we take the square of the y component. This is the y component. So we take the square and then we add these two, and then take the square root, and we get the distance 4.69 kilometers for this vector. And the angle, for angle, we take tan inverse of the y component divided by the x component. And using calculator, we find the angle of 56 degrees. So this simple example shows a powerful feature of the vectors. If we know the x and y components, we can find the magnitude of that vector and also the angle of that vector which it makes with the x-axis. Now we talk about the unit vectors. तो यूनिट वेक्टर जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है कि इट हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1 and it points in a typical or particular direction, and it lacks both dimension and unit. इसका जैसे नंबर है या यूनिट है और डायरेक्शन है, it only used to specify a direction. सबसे पहली एग्जांपल जो हम लेंगे वो कहलाती है the unit vectors along x-axis, the unit vector along y-axis, and the unit vector along z-axis. So in x, y, z coordinate system, जो कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें जो यूनिट वेक्टर है जो कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, इट इज डिनोटेड विद वेक्टर आई, उसके ऊपर एक छोटा सा हैट बना हुआ है, and the unit vector which is in the direction of y axis denoted with j, और इसी तरीके से the unit vector in the direction of z is denoted with k. Now we can represent a vector with the magnitude of the x component and the magnitude of the y component, and by using the direction of x axis and the direction of the y axis. So this I is a unit vector in the direction of x axis, and j is the unit vector in the direction of y axis. So this is the same diagram which we have shown earlier, जो इससे पहले हम उस diagram को देख चुके हैं, जिसे हमने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किया था,
अब इस डायग्राम में उसको हम ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द ए एक्स वेक्टर, सॉरी ये थोड़ा सा, ए एक्स वेक्टर इज नाउ रिप्रेजेंटेड as ax, magnitude of that vector multiplied with the unit vector in the direction of x-axis. And this is the same एग्जाम्पल। अगर इसको मैं जो इससे पहले हमने लर्न किया था उससे अगर मैं मिला दूं, तो ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद इट्स एक्स कंपोनेंट and its y component, and we can represent the x component with the magnitude of the x component and the unit vector in the direction of x, and similarly a y vector is represented with the magnitude into the unit vector in the direction of y axis. Now we take an example, and in this example we have a vector r with rx. That means the x component of that r vector, and its length is 2.6 meters. And the unit vector in the direction of x-axis minus 2.3 meters. So this minus 2.3 meter is the y component of the r vector, and j is the x. J is the unit vector in the direction of y-axis. So by using graph paper and geometry, we can represent the x component with 2.6 units in the direction of x, and y component of r minus 2.3 in the direction of y-axis. Because it contains a minus sign, so we have to take a direction which is in the negative y, in the negative side of the y-axis. So, and this r is the actual vector which is given. So if this vector is given, we can similarly find the magnitude of the vector r by using the formula, जिसमें कि हम आर एक्स जो एक्स कंपोनेंट है उसको स्क्वायर करते हैं, दिस इज द आर एक्स कंपोनेंट, and this is the ry component, and by using the formula we get approximately 3.5 meters. The length of this r is 3.5 meters. And the angle which is makes with the x-axis, this angle minus 2.3 meters divided by 2.6 meters come out to be minus 41 degrees centigrade. Because this angle contains a negative sign, so we go in the clockwise direction for this. आमतौर पे जो वेक्टर्स दिए होते हैं उनका जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, यानी उनका जो जो एंगल की डायरेक्शन है वो ये होती है, जो कि एक पॉजिटिव पॉजिटिव में जो है लेट्स से दिस इज अल्फा एंगल, दिस इज इन पॉजिटिव। लेकिन जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल दिया जाए तो उस सूरत में जो है वी गेट नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ तक जो हमने सीखा है उसमें अगर आपको कोई भी वेक्टर जो है वो अगर दिया जाए तो हम उस वेक्टर जो है उसके उसका मैग्नीट्यूड और उसका जो डायरेक्शन है वो मालूम कर सकते हैं।
Now we talk about the vectors multiplication. Vector multiplication में there are two types, जिसमें कि हम वेक्टर्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या वेक्टर्स को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब हम वेक्टर्स को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो रिजल्ट कैन बी ए स्केलर प्रोडक्ट एंड रिजल्ट कैन बी ए वेक्टर प्रोडक्ट। अगर रिजल्ट जो है वो स्केलर है तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉट प्रोडक्ट, और अगर जो है वो रिजल्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। So if we multiply a vector A by a scalar S, we get a new vector. So we take a vector A and specify that vector with its x component and multiply it with the unit vector in the direction of x, and add it with the y component, the magnitude of the y component of the vector A, and multiplied with the unit vector in the direction of y-axis. So if this vector is given and we multiply this vector with a scalar value s, then the scalar value multiplied with both the x component and similarly with the y component. So its magnitude is the product of the magnitude of A and the absolute value of S. Its direction is the direction of A if S is positive, but opposite if the direction if S is negative. Okay, to divide A by S, we multiply A by 1 divided by S. So if S is 1, for example, we get the same vector. If S is 2, for example, then we get 2A. So each component is multiplied with 2. And if we have S is equal to 1.5 or zero point 0.5, then we multiply 0.5 with the x component and with the y component. Now we talk multiply vector by vector, and in this case we talk about the scalar product. The scalar product of two vectors which is called the dot product. The dot product जो है उसको जैसे two vectors are given, so it is represented with A dot B by definition, and it is equal to A B cos of the angle between A and B. So angle between A and B is here in this case is represented with phi, small Greek letter phi. So by definition, A dot B, the dot product of two vectors A and B is equal to the magnitude of A multiplied with the magnitude of B multiplied with the cos or cosine of the angle between A and B. So if we use the x, y, and z components of vector A and similarly the x, y, and z component of vector B, and we represent a vector with its in the rectangular coordinate system, so we get their product after multiplication, that the vector A and B is dot B is equal to ax bx plus ay by plus az b. Now we talk about the multiplication of vector by vector, which result in a vector. This is called a cross product. So cross product is given by a determinant by definition, and in this determinant, the first row is the unit vectors along x, y, and z direction, and the first column contains the x components, ax and bx, and similarly the second y components, and the last one is the z components. If we talk about the rows, then
The first row contains the unit vectors, the second row contains the components of the x vector, and the third row contains the components of the b vector. And after we open this determinant by using the determinant rule, we get this result. So when we take I, so we just ignore the first row and the first column, and we place I here and multiply it with the determinant of AY, AZ, BY, and BZ, AY, AZ, and BY, BZ, and then we multiply AY with BZ to get this one, AY, BZ, minus AZ and BY. So this term. Similarly, we open the other terms by using the determinant method. Now we take how the cross product results in a vector and what is the direction of the vector of A cross B. So now we talk about the direction of the A vector cross B vector. What is the direction? So direction is determined with the help of right hand rule. And the right hand rule, we place the hand on the first vector, which is A, and then we move the right hand towards the B vector. So we move the right hand from A towards B. So first step is to place the hand in the direction of A. The second step is move the hand from A to B. And the finger actually, the thumb points to the direction of the A cross B. So this C vector is primarily the result of A cross B. So in this module, we have reviewed the basics of vectors, in which we go through some of the examples of vectors, quantities, and scalar quantities. Then we see the concept of addition and subtraction in vector, and we review the properties of vector addition, commutative law, and associative law. Then we talk about the vector components when vectors a vector is represented in XY coordinate system. Then we learn the concept of unit vectors, and finally in this session we review the vector multiplication. Now we review some of the problems which are related with this session, and we will quickly review those problems. The first problem is, which of the following quantities are scalars and which are vectors? So the answer is given. The vector quantities are part A, which is weight. Similarly, part B, which is momentum, and part J, which is magnetic field intensity. The rest of the properties are the rest of the quantities are the scalar quantities.
So if three vectors are given, can we find A minus B plus 2C? So in this case, we have to change the direction of B. So if we place minus B here, the direction of the B will be changed. And similarly, we have to multiply C with 2, so that the magnitude of C become twice. Then we place vectors in a way that we can calculate the result of this vector addition. So first we take the vector A and then change the direction of B and then place here, and head to tail a rule will apply, and then multiply C with 2 and then place that vector here. So from the tail of the A to the head of the 2C vector, we get our result. So graphically, we can represent these vectors on a graph paper by using scale and use the measurements and find the actual magnitude of the vector. Okay, find the position vectors R1 and R2 for the points P1 and Q of a rectangular coordinate system in terms of the unit vectors. So R1 at point P, so the X component, Y component, and Z component of R1 are given in the form of a point, and similarly R2, which is the R2 X component and R2 Y component and R2 Z component are given. So when we represent these vectors, so we represent R1 vector is equal to the X component of R1 vector multiplied with the unit vector in the direction of X-axis plus the Y component of the R1 vector, which is 4 here, and similarly the unit vector in the direction of Y-axis, and similarly 3 is the Z component of R1 and K is the direction of the unit vector directed in the direction of Z-axis. Now we determine the resultant of these position vectors. If we want to have a sum vector which add these two vectors analytically, not using geometry but analytically. So we add the X components and the Y components and form the result. So 2 plus 1, 3, 4 minus 5, the minus 1, and 3 plus 2 is the 5. So R1 plus R2 is this 3 minus J plus 5K. In this question, we are given three vectors and we are to find the magnitude of R3, R1 plus R2 plus R3, and similarly 2R1 minus 3R2 minus 5R3. So first we take the part A. In part A, we have to find the R3. So R3 magnitude is given by the magnitude of this given vector R3, which is placed here. And we take the square of minus 1 square. We take the sum of square of 2, and we then take the square of 2, which comes out to be 9. और जब हम इसका square root लेंगे, the answer will get 3. In second part, we first add these three vectors. So we add three vectors, जैसा कि इससे पहले वाली स्लाइड में हमने ऐड किए हैं, और ऐड करने के बाद जो इनका रिजल्टेंट सम वेक्टर आएगा, we take the magnitude of that vector here, and the magnitude comes out to be 4 square root of 2.
Similarly, we can solve for part C. In our next question, we find a unit vector which is parallel to the resultant vectors R1 and R2. So first we find the resultant vector, which is the sum of R1 and R2. And after that, we have to find the magnitude of the vector R, and then we divide this vector R with its magnitude. When we divide R with its magnitude, we get a unit vector in the direction of R. So this magnitude 7, when we divide this vector R with this 7, we get this vector, which is actually a unit vector in the direction of R. A unit vector in the direction of R. And we can check it by taking the magnitude of this unit vector. The magnitude after calculation will be 1. Again, when we have to find a unit vector in the direction of any given vector, we take the magnitude of that vector and then divide that vector with its magnitude to get the unit vector. So the general formulation is that any vector R can be represented with its magnitude, and it's a unit vector parallel. So to find this unit vector R, we have to divide this vector R with its magnitude. Okay, in this example, a scalar field is given with this function phi x y z, 3x square z minus xy cube plus phi. We find phi at the points which is 0, 0, 0, b, and similarly c. So we put the value of x, y, z for that point in the given function to get the output. जैसे कि पहले पॉइंट में देखें कि जब हमने 0, 0, 0 पुट किया है तो उस वक्त हमारे पास आंसर जो है वो 5 आ रहा है. इसी तरीके से जब हम बी पॉइंट पुट करेंगे, 1 is in place of x, similarly in place of -2, and in place z, 2 in place of z. So after calculation we get the answers. In this example, find the angle between the vector a and b. So how we find the angle between a and b? We take the dot product, and after taking the dot product, we primarily divide the dot product with the magnitude of a and magnitude of b, because the formula is a dot b is equal to ab cos theta. So after putting the values, we get the cos theta value equal to 0.1905, and taking the inverse cos, we get theta is equal to 79 degrees. So theta will be cos inverse a dot b divided by the magnitude of A multiplied with the magnitude of B. So to calculate the angle between two vectors A and B, we have to calculate the dot product and also the magnitudes. And by using this equation, we can find the angle between these two vectors.
Now in this example, if A dot B is 0 and if and A and B are not 0, show that A is perpendicular to B. So we know that A dot B is AB cos theta, and if we take the condition जो कि given है कि A B is 0 है, if we take the 0, now A and B are not 0, so the only possibility is that cos theta is 0. And cos theta is 0 when the angle between these two vectors is 90 degrees, which actually proves that the two vectors are primarily perpendicular to each other. So A vector is perpendicular to each other to B, making 90-degree angle between them. Determine the value of A so that A and B are perpendicular. So what we do is we have to find the value of A, and when these two vectors are perpendicular, their dot product is 0, because we have solved this question about. So we take the dot product, we multiply the x component and then multiply with the y component and multiply with the z component. So by using this definition of dot product, in which the x component are multiplied and y components are multiplied, and then z components are multiplied and added. These are three products are added to get the A dot B. So when we add these products and equate them to the 0, we get the value of A is equal to 3. These two are very interesting questions and they can be solved within 1 to 2 minutes. तमाम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए. These are some of the important questions. Okay, इस एग्जांपल में find the projection of vector A on the vector B. So when we see the dot product of vector A and vector B, A vector and B vector, so by definition this is AB cos of theta Now the question is, find the projection of vector A onto the vector B. So let's say this is the vector A and this is the vector B. So this is vector A and this is vector B. And the angle between them is theta. So the projection of vector A on vector B is, so we take a line from the head of the vector A and draw on vector B, which makes 90-degree angle. So this vector from here to here is the projection of vector A on vector B. And this small vector is also So we talk about this vector, जो कि primarily projection of vector A है on projection of vector B, and this projection is primarily can be written as the component of A in the direction of B by using A cos theta. A similar concept for the projection of B onto the projection of A, and here we calculate a unit vector in the direction of B by using the same relation जो इससे पहले हम यूज कर चुके हैं, जिसमें हमने B वेक्टर को किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया.
So we get a unit vector in the direction of D, and then we take a dot product of vector A with that unit vector to get the projection of A onto that vector. So we simply multiply the unit vector with the vector A through the dot product, and using the principle of dot product get the final answer, which is a projection of vector on the vector B. There could be other ways to solve the same question, but here a, a projection and a unit vector, both methods were used to find the projection of a vector A onto the projection onto the vector B. Okay, in this example, in this problem, if the cross product of two vector is 0, so and A and B are not 0, show that A is parallel to B. So we know by definition A cross B is AB sine theta, and if A cross B is 0, then we have sine theta is 0, and we know that the sine theta 0 means theta is either 0 degree or 180 degree, which shows that A and B are both parallel. In second part of this example, if A is given and B is given, we can find the A cross B. So A cross B can be found by using the determinant, in which we write the I, J, and K unit vectors, then the X and Y and Z components of the A vector, and similarly the X, Y, and Z components of the B vectors. And after solving this determinant, we get the answer, which is again, as you can see, is a vector. So in this module, we learn the basics of the vectors, and in problems, we apply those concepts to solve the basic problems. Thank you very much.